Hello students, we are going today to start new topic relations and function, but in this class we will study relations. As we know about the set we have taught in previous classes, suppose A and B are two non-empty sets so then A cross B is said to be let A and B are two non-empty sets, then A cross B is said to be Cartesian cross product of A and B. A cross B is said to be Cartesian cross product of A and B. Then subsets of A cross B, subsets of A cross B are said to be relations, are said to be relations. Okay, if there are A and B two non-empty sets and their cross product said to be Cartesian cross product of A and B, and subsets of A cross B are said to be relations. A relation is denoted by कैपिटल आर. एक रिलेशन को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. इट इज क्लियर. सो इन दिस वे कैपिटल आर अब इक्वल A comma B such that A belong capital A and B belong capital B. This condition follow कि if capital R defined from A to B, अगर कैपिटल R रिलेशन जो A से B पे डिफाइंड है तो देन वी विल से कि कैपिटल R will be equal to A comma B where A belong to capital A and small b belong to capital B. This condition can be written this way also. If a relation which is defined from A to B and these A and B are two non-empty sets, then relation R can be defined this way, which is given here. A comma B, here A belong capital A and a small b belong to capital B. Suppose if a small a comma b belong to capital R, तो then बेटा एलिमेंट
B is called image of element A, and element A is called pre-image. Pre-image of B. Suppose any pair A comma B belong to capital R, I mean in relation, so then second element is said to be image of first element and first element is said to be pre-image of second element. So this way we can say a relation, it is also a set which contain elements in the form of order pairs. So in each order pair second element is said to be image of first element and first element is said to be pre-image of second element. It is clear? So this is a relation. In other words, simply we can say कि relation a attachment between two elements. जैसे A और B आपका पेयर था and it belong to R, तो it mean कि element A related to element B, that is attachment of this element to element B said to be relation. In shortly we can say, now types of relations. Types of relations. There are many types of relations. One, empty relation. एम्प्टी रिलेशन, जैसे नेम से ही क्लियर है कि एम्प्टी रिलेशन कि कोई भी एलिमेंट जो किसी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो, तो अ रिलेशन इन दिस केस ए रिलेशन कैपिटल आर ऑन सेट कैपिटल ए is said to be empty relation. Empty relation. A relation capital R on set capital A is said to be empty relation if no element of A is related to any element of A. It mean A का कोई भी एलिमेंट A के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो सच type relation is said to be empty relation. It is also known as, इसको हम और किन किन नेम से जानते हैं? It is also known as void relation, null relation. It is also known as void और null relation.
Okay, also known as void or null relation. That is, capital R equal phi. This phi सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, जैसे अभी आपको बताया था कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ कार्डियन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स, तो हियर दिस रिलेशन डिफाइंड ऑन कैपिटल ए एंड इट्स कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट टू इटसेल्फ विल बी ए क्रॉस ए, एंड दिस phi is subset of a cross a, and in this phi there is no element here. Due to this relation phi is said to be empty relation. So such relation in which no element of the given set is related to any element of the given set, so such relation is said to be empty relation, like this. After this, universal relation. Universal relation. A relation capital R is said to be universal. A relation capital R is said to be universal, defined on set capital A. A relation capital I is said to be universal relation. Yeah, this way. A relation capital R on set capital A is said to be universal. Universal relation if each element of set A is related to every element of set A. It means कि each element of set A is related to every element of set A. सेट ए का ईच एलिमेंट सेट ए के ही एवरी एलिमेंट से रिलेटेड होगा, तो सच टाइप रिलेशन सेट टू बी यूनिवर्सल रिलेशन. तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, दैट इज कैपिटल आर equal A cross A, and this A cross A is subset of A cross A. As we know about the subsets of any given sets, कि every set is subset of itself. कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट होता है, and phi also subset of every set. तो this way capital R which is equal to A cross A, and this A cross A is subset of A cross A. So this way we will say here that each element of this set A is related to every element of set A. So it is said to be universal relation. Next, after this,
reflexive relation. Reflexive relation. A relation capital R, a relation capital R on set capital A is said to be reflexive. Is said to be reflexive. Is said to be reflexive if A related to A for all A belong capital A. It mean किसी सेट का कोई भी एलिमेंट अपने से खुद से ही रिलेटेड है तो देन वी विल से सच टाइप रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन. जैसे यहाँ कैपिटल ए सेट है, कैपिटल सेट ए का आपने एलिमेंट ए लिया तो दिस एलिमेंट ए विल बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, अपने से खुद से ही रिलेटेड होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ एनी सेट रिलेटेड टू इटसेल्फ. तो देन वी विल से रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, तब रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है. दिस सिचुएशन कैन बी रिटन दिस वे और A, A belong to R for all A belong capital A. It mean कि which element we are going to consider here, image or pre-image will be remain same. एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट दोनों सेम होंगे. सेकेंड एलिमेंट जो आपका इमेज होता है और फर्स्ट एलिमेंट प्री इमेज होता है. तो इन केस ऑफ रिफ्लेक्सिव इमेज और प्री इमेज विल बी सेम, दोनों सेम होंगी. तो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन. Symmetric. A relation capital R is said to be symmetric A relation capital R is said to be symmetric on set capital A if A related to B implies that it is also necessary to be related to A and for all A B belong to capital A. ए और बी आपने कैपिटल ए से दो एलिमेंट्स लिए. कंडीशन क्या है कि ए रिलेटेड टू बी, ए बी से रिलेटेड है तब बी भी आपका ए से रिलेटेड होना चाहिए. दैट इज इफ ए कोमा बी दिस पेयर, सपोज दिस पेयर बिलोंग टू आर, तो इंप्लाइज दैट इट इज नेसेसरी हियर कि बी कोमा ए this pair also belong to capital R. Four elements A and B belong to capital A. A और B जो कैपिटल A से कंसिडर किए गए हैं उनका A, B वाला पेयर जो R के अंदर है तो B, A ये पेयर भी R के अंदर होनी चाहिए. तो देन वी विल से सच टाइप रिलेशन सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन. नेक्स्ट ट्रांजिटिव रिलेशन.
ट्रांजिटिव रिलेशन। In which a relation capital R on set capital A is said to be transitive if A related to B and B related to C. Here we consider three elements from capital A set, A related to B and B related to C, to then implies that it is necessary that A related to C, A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, तो A आपका C से रिलेटेड होना चाहिए। एंड दीज एलिमेंट्स फॉर ऑल A B C बिलोंग टू कैपिटल A। तो ये पेयर भी A C से रिलेटेड है, तो देन वी विल से रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव रिलेशन, रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा। इन अदर वर्ड वी कैन से दिस वे, और इफ pair of A comma B belong to R and B comma C belong to R, so then it must be A comma C also belong to R. It is clear? A B का पेयर R के अंदर है, B comma C belong to R, तो then it must be A comma C also belong to R, तो then we will say relation are said to be transitive relation for all A B C belong to capital A. This is transitive relation. Next and last, equivalence relation. Equivalence relation. Such relation which is reflexive, such relation which is reflexive, symmetric, as well as transitive, as well as transitive. तो such relation which is reflexive, symmetric, as well as transitive is said to be equivalence relation. इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन जो आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो सच टाइप रिलेशन सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। आफ्टर दैट we will discuss examples related to types of relations in next class. If you like this video, so share this video and subscribe this channel. If you have any doubt, so then you follow Telegram, link description में है। Thank you.